watching CNN News 18 and I'm Maria Shakil. Our top story this hour is that the new Punjab Congress chief, Navjot Singh Sidhu, has stirred another controversy. At a time when India is busy evacuating its nationals in Kabul, two of Sidhu's aides implied that the Taliban will improve the condition of Afghanistan. And after facing a flack from Chief Minister Captain Amarinder Singh, Sidhu summoned Malwinder Singh Mali and Pyare Garg. But after a sit-down with Sidhu, both leaders came out and defended their remarks. पंजाब बर्बादी दे राह ते धक्किया गया सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਮਾਨ 'ਚ ਸਿਰਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਮਨ शांति ਲਈ ਯਤਨ करने चाहिए। सिद्धू साहब का एजेंडा क्या है? आप कह रहे सिद्धू साहब का सिद्धू साहब का घर है, उससे पूछो एजेंडा क्या है उनका, उनसे पूछो ना। जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਵਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੋਤਾ ਬਣਾਤਾ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, वही मेरा वर्षन। सिद्धू साहब पंजाब के मुद्दों पे की बात की है कि पंजाब के मुद्दे क्या हैं, कैसे उसका सल्यूशन हो। पंजाब में जो करप्शन, जो माफिया राज का दोष लग रहे हैं, वो कैसे ठीक हो। पंजाब में शांति कैसे हो, भाईचारा कैसे मेंटेन हो, पंजाब में विकास कैसे हो, इंडस्ट्री बंद हो रही है वो कैसे चले। हम कोई भी सरकार हो, वो ए की हो, बी की हो, सी की हो, अगर सरकार ठीक काम करती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, अगर गलत काम करती है उसकी आलोचना करते हैं। So both these leaders causing embarrassment clearly to Captain Amarinder Singh, and instead of reprimanding them, Navjot Singh Sidhu spoke to them. We really do not know what really happened behind the scenes, behind the curtains, but they came out. They were more brazen about their remarks. They said that they stand with whatever they had put out on their social media platform. Undoubtedly, this is an embarrassment for Captain Amarinder Singh, as he'll be facing an important election in the next few months in Punjab, where there is a resurgent Aam Aadmi Party. There are several questions regarding his own governance. And the big factor certainly is anti-incumbency against Punjab Chief Minister, because this is a state which has the track record of voting out the incumbent. Pallavi Ghosh is joining us live. So Pallavi, you know, it's the differences between the two sides remain. No matter what they may try to paint every now and then, the inherent differences always come out on the surface. Yes, and a more we're coming closer to the elections in the state, which is going to be in February next year. I think the differences are becoming more and more apparent and also brazen. Now look at the situation. When Navjot Singh Sidhu was huddled in a meeting with his two media advisors in the backdrop of these controversial comments which Manish Tiwari and the captain have objected to, we actually have these two people coming out and making a statement which sticking to their stance. But more importantly, Sidhu seems to be tweeting from inside, where the attack was actually on the Punjab state government as far as the sugarcane prices goes. So the deep divide is just widening. And also I think the messaging which is definitely going out from Sidhu and his media advisors is that we just don't care. It's a needless controversy which has been stoked by the captain. If he hadn't spoken out, then the BJP wouldn't have got a handle. And therefore it's not us, but the captain who is the one who's to blame. But you know, Pallavi, this of course is playing on that nationalism pitch. At a time when India is going an extra mile in evacuating its citizens and also sending a message that for religious minorities in Afghanistan, be it the Hindus or the Sikhs, its door is open. Here are people who are seen as apologists. And you know, when it comes to a nationalism issue, the Congress has often been caught on the wrong foot. At a micro level, we are talking about its repercussions in Punjab politics. But at a macro level, this is where the problem will begin for the Congress party, because the Gandhis are silent. Sidhu is being seen as a person who was handpicked by the Gandhis. He's not been reprimanded, though Harish Rawat has said that we're going to ask for explanation. But that's come a little bit too late. And therefore, the Congress will always have to face that onslaught from the BJP, that whenever we are in a crisis mode, the Congress party is never seen to be standing by us. Yes, and that certainly is a big question that will be asked again and again. Pallavi Ghosh, I appreciate your time. And the Congress itself now seems to be divided on this issue. Listen in to some of the reactions that have come in. कोई उथल-पुथल नहीं है। मैंने जानकारी ली थी, सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है
वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को बरकरार रखने के लिए जब पंजाब आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, उसके बाद कश्मीर आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, हज़ारों कांग्रेस जनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। And Gaurav Shukla is joining me live. He is from News18 Punjab. Gaurav, ये तो इंक्रीजिंगली कैच-22 होता जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। एक तो ये उनके पार्टी के खुद के सदस्य हैं जिनके बारे में वो बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं बोलो, और दूसरी तरफ वो खुद ही प्लान कर रहे हैं और सरकार से मिलते हैं, बोलते हैं इवैक्यूएट करिए। किस तरह का माहौल बनता जा रहा है ये सब मुद्दे पर पंजाब के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए दो इसमें अब कॉन्फ्लिक्ट तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो सिद्धू वर्सेस कैप्टन वाली स्थिति पंजाब में पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन अगर हम खास तौर पर मालविंदर सिंह माली या फिर डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग की स्टेटमेंट्स को, जो सिद्धू के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को देखें तो वो प्रो गवर्नमेंट तो नहीं है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाती हैं। तो अब सीन ये है कि जो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्लोज गिने जाते हैं, जैसे मनीष तिवारी का हमने बयान अपने दर्शकों को सुनाया, तो वो तो इनके खुलकर अगेंस्ट बोल रहे हैं। जो सिद्धू के प्रो माने जाते हैं, जो सिद्धू के करीबी माने जाते हैं, वो इन बयानों से किनारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कांग्रेस के ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्धू के सलाहकार हैं, या कांग्रेस की स्टेटमेंट इसको नहीं कह सकते। तो पंजाब की सियासत में कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों सिद्धू और कैप्टन के बीच साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिस तरह से हमने पहले पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखा है पिछले कुछ दिनों में, वो एक बड़ा सवाल जरूर है। आपने कहा कि पंजाब की सियासत इसमें किस तरह से देख रही है, तो देखिए जो विपक्ष है उनको लग रहा है कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि एक तो आप पूरा देश का इशू है, देश की सुरक्षा का इशू है, जिसके लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जो इस समय बॉर्डर पर हो रहा है या बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उसका फायदा जो देश के विरोधी ताकतें हैं वो उठा सकती हैं, पाकिस्तान उठा सकता है। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जो सिद्धू के सलाहकार हैं वो अलग स्टेटमेंट देते हैं, और दूसरी तरफ मालविंदर सिंह माली हैं जो सिद्धू के सलाहकार हैं, वो तालिबान को लेकर अलग तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो जो विपक्ष है उनको बैठे बिठाए सुनहरा मौका मिल चुका है। आप दिन भर की स्टेटमेंट्स देखिए, और वो कैप्टन को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी और सिद्धू को भी, दोनों को भी घेरने की कोशिश साफ तौर पर हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब की सियासत में कांग्रेस के अंदर वर्सेस सियासत के अलावा वहां के जो लोकल्स हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो इस तरह, वो जो कैप्टन वर्सेस सिद्धू चल रहा है, वो किस तरह से देख रहे हैं? ये जो जनता, देखिए पंजाब के लोगों की बड़ी सीधी सी है कि उनका 2022 के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस है, और जिस तरह से मालविंदर माली दे रहे हैं आज की डेट में स्टेटमेंट्स, अगर आप पंजाब के लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उससे किनारा भी करते हैं, क्योंकि देश के तो साथ हमेशा पंजाब रहा है। आप इस तरह से कभी नहीं कह सकते कि पंजाब देश के अगेंस्ट गया हो या पंजाबी देश के अगेंस्ट गए हो, तो वो उनके तो साथ में रहते हैं। लेकिन यह कि जो सिद्धू की स्टेटमेंट्स हैं वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिद्धू अपने सलाहकार की स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि सिद्धू बहुत खुलकर इसके ऊपर नहीं बोले हैं। सिद्धू के जो करीबी हैं, प्रगट सिंह विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि ठीक है ये उनकी स्टेटमेंट है, कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं है। कुलजीत नागरा है, वो एक्टिव प्रेसिडेंट लगाए गए हैं हाल ही में सिद्धू के साथ, वो भी कहते हैं ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं अपनी स्टेटमेंट के बारे में बोल सकता हूं। तो पंजाब के लोग कहीं ना कहीं इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि सिद्धू आकर खुलकर बोलें कि आपकी जो ये सलाहकार आपको सलाह देने वाले हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो एक तरफ चीज तो बहुत क्लियर है कि पंजाब के लोग जो हैं वो हमेशा देश के साथ रहे हैं, और इन स्टेटमेंट्स को लेकर, खासतौर पर तालिबान को लेकर या पाकिस्तान प्रो तो नहीं पंजाब के लोग हो सकते, वो इंतजार जरूर कर रहे हैं कि सिद्धू कब इसके खुलकर बोलते हैं। All right, let's see whether Sidhu actually makes a statement against his aides. Thank you so much for joining us, Gaurav. Let's listen in to all the reactions that have come in.
देखिए, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनके एडवाइज़र भी ठीक उसी प्रकार के हैं। आज सोचते हुए भी बहुत चिंता हो रही है और ये बहुत ही दुखद है जिस प्रकार के बयान सिद्धू जी के दोनों एडवाइज़र से आए हैं। माली साहब जो सिद्धू जी के एडवाइज़र हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया एक इलीगल ऑक्यूपेंट है कश्मीर का। और ठीक उसी प्रकार जो प्यारे लाल गर्ग हैं, उनके दूसरे एडवाइज़र सिद्धू साहब के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो क्योंकि ये पंजाब के हित में नहीं है। ये तो डाल डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पाँच पाँच पे उनके एडवाइज़र चल रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जिस लीडर ने एडवाइज़र अपॉइंट किए उसको मालूम है कि वो उसको सूट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सूट करते हैं, उसकी थिंकिंग को सूट करते हैं, तभी कोई किसी को एडवाइज़र लगाता। तो हम बार बार बात कर रहे हैं मलविंदर सिंह माली की, एडवाइज़र की। सिद्धू साहब की सोच कैसे लगा? उनकी सोच भी तो यही है। जब सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके दोस्ती के हाथ कौन बढ़ा रहा था? And meanwhile, the situation in Afghanistan remains tense as the Taliban continues to be on a rampage of sorts. The government has called for an all-party meet on Thursday to discuss the crisis in Afghanistan. This development comes after Prime Minister Narendra Modi asked the External Affairs Minister to brief all flow leaders on the development in the neighborhood. As of now, 600 stranded Indians have been brought back home. India has also assured help to Hindus and Sikhs in the war-torn country. We'll be joined up by our reporters in just a bit. So the government going ahead and holding a press conference now. All-party meeting has been called for this to discuss the situation and what the government of India's efforts have been and what will be the way forward. Payal Mehta is joining me on the phone line. Will this be a virtual meet? Maria, this is not going to be a virtual meet. This is going to be a physical meet which will take place on the 26th of August at 11 o'clock in the morning at the Parliamentary Annex C main committee hall as well. So obviously e-invites have been sent or are in the process of being sent to all the floor leaders of various political parties. I'm also given to understand by my sources, since there are parties like Asudud and Owaisi who are of course just two-party MPs, they are also going to be in the process of getting an invitation. Unlike in some of the meetings, Maria, where you've seen that MPs of those parties who had more than 5 MPs, they were invited, but this is a case in which every political party who's got members of parliament in the parliament, they've been extended an invitation to, obviously because the government wants to clarify its position. And this is that myth saying that this government works in silo, doesn't take the opposition on board on various issues. And mind you, Maria, this was a meeting which is being called suo motu by the government without any provocation from any opposition party or without any demand from any opposition party, much on the lines of what we saw, the kind of briefing that happened by Rajnath Singh, before the start of the monsoon session of Parliament, when he briefed, former Defence Minister Sharad Pawar, ante Antony, among the others, on the China issue. All right. Thank you so much for joining us. And CNN News18's Shivani Gupta spoke to an Narkali Kaur who managed to escape from Kabul and has been brought to India. Listen in. पहले आप जैसे जो अफगान एमपीज हैं जो भारत के लिए आना चाह रहे थे, उनको तालिबान आने नहीं दे रहा था। एयरपोर्ट पे आपने काफी देर वेट किया, आपको वापस भी एक गुरुद्वारे में भेज दिया गया, बट फिर मेहनत करके इंडियन गवर्नमेंट आपको यहाँ लेके आई है। क्या आप हमें बता सकते हैं वो 2 दिन आपके लिए कैसे रहे? शुक्रिया, धन्यवाद आपके फोर्स। हम इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, Ministry of External Affairs and Indian Air Force और ख़ासतन पुनीत सिंह चंदोक के बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और 2 दिन के हम कांटेक्ट में थे कि कैसे ही रास्ता निकले जाएगा। जो हम अभी हालात ऐसे ही हैं, हम बहुत मजबूर हो गए कि अफ़गानिस्तान को छोड़कर कोई दूसरे कंट्री में कोई टाइम वहाँ पे रहे। हम ये उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हमने बहुत हालात बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि तालिबान तो पूरे दुनिया को ये बताना चाह रही है कि उनसे किसी को खतरा नहीं है।
और अगर कोई भारतीय हो, सिख हो, हिंदू हो, उनको खतरा नहीं है। आप तो एमपी हैं अफगानिस्तान में, तो आपके लिए हालात इतने खराब क्यों थे? मेरे लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए। यानी ये मैं नहीं कहती हूँ कि यानी मैं सेफ नहीं थे। अभी सब दुनिया ये देख रही है अफ़गानिस्तान के एक ट्रेजेडी हालात है। आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में सब लोग अपने घर से बाहर निकलकर एयरपोर्ट में कितना रश है। हर रोज़ वहाँ एयरपोर्ट के आसपास अंदर तीन बंदे तो बिल्कुल एक नॉर्मली है कि लोगों की डेट होता है। वहाँ पे ऐसी ही रश है, फायर है कि हम ये कभी भी कौन भी नहीं सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट ऐसा होगा। अफ़गानिस्तान यानी हम 20 दिन 1 महीना पहले ये नहीं सोचते थे कि अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे होगा कि खौफ इतना ज़्यादा होगा कि सब अपने घर को छोड़कर निकल कर हर जगह पे जाए, हमारे लिए सेफ है, ये सोचते हैं लोग। And citing the situation in Afghanistan, Union Minister Hardeep Puri justified the need for the Citizenship Amendment Act. Puri cited the plight of Hindus and Sikh minorities and how they're going through a harrowing time. He said this is precisely why it was necessary to enact the Citizenship Amendment Act. But MIM Chief Asaduddin Owaisi objected to that remark. They should have made it religious neutral, simple as that. I had said in my speech in the parliament that strategically this was a wrong step to be taken by the government, wherein you have made it on the basis of religion. Had it been religious neutral, people who have helped us, they would have easily been able to come to India. But you have made it on the basis of religion, which again is a violation of right to equality. Actually, Hardeep Puri had tweeted saying that is the reason why the Citizenship Amendment Act was brought about by the government. Remember, it is still to be notified, and that is the question that is being repeatedly asked to the union government as to why this decision of putting it on hold. Payal Mehta is joining me on the phone line. Payal, when is the government planning to notify Citizenship Amendment Act? We are seeing, union ministers and others trying to score brownie point in the context of Afghanistan. Yes, the tweets that you've seen by Hardeep Singh Puri and also by Amit Malwinder is basically grandstanding as far as the political scenario is concerned. Because remember, the Congress party, the TMC and several opposition parties had vehemently opposed this bill in both houses of parliament. But, with the government being able to stitch up the numbers, they were able to pass this particular bill. As far as the rules to be notified, the government has already taken 5 extensions from the subordinate committee, which is, of course, a parliamentary standing committee so far as well. But, Amit Shah has gone on record, Maria, multiple times, including very recently, also during the Bengal election, when he said very clearly that the current priority as far as the government is concerned is to make sure that they manage the COVID crisis. India has launched the biggest vaccination drive across the world, and we've been able to vaccinate close to 60 crore people so far, but we still have a target of achieving another 20 crore plus people in the next couple of months as well. So obviously, since this is a huge exercise, and along with that, the population register will also have to be updated. The census is also due. So all of these are time-consuming processes and which takes a lot of manpower also in that respect. So that's the only technicality in the basis of which the government has not been able to notify the rules as far as the CA is concerned, Maria. All right, Payal, thank you so much for joining us. And after capturing Afghanistan, hundreds of Taliban fighters are at the gates of Panjshir. The valley is currently the center of resistance in war-ravaged Afghanistan. Taliban claims it wants dialogue, but famed anti-Taliban fighter Ahmad Shah Massoud's son, who is leading the resistance, says he will never surrender. So the developments now happening and the resistance is coming now within Afghanistan. There are several people now standing up against Taliban fighters, saying that they are not ready to give their part of the country. So certainly as far as resistances are concerned, we are seeing several of such resistance play out in several parts. Shailendra Wangdu is joining me on the phone line. Shailendra, what else can you tell us? देखिए, ये कहा जा रहा था तालिबान की तरफ से कि
3 जो जिले हैं बागलान प्रोविंस के, उस तरफ वापस तालिबान का कब्जा हो गया, ये उनका दावा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजशीर जो है, जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हो रही है तालिबान के खिलाफ, उसको 3 एरिया से, 3 डायरेक्शन से, साखर, बदख्शान और अंदराब, इन डायरेक्शन से उनको घेर लिया गया है। और अब ये तालिबान का दावा है कि सालांग पास जो वहां का एक्सेस देता है, सालांग पास वो ओपन है। हालांकि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, या यूं कहें जो पंजशीर की तरफ से इंफॉर्मेशन जो आ रही है, उनका ये दावा है कि भले ही हमको 3 तरफ से घेर रखा हो, अभी तक किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हुआ है। दोनों जो तरफ के या फोर्सेस कहें, उनका कोई आमने सामने अभी टकराव नहीं हुआ है। तो फिलहाल वहां पे सिचुएशन टेंस है, लेकिन जो पंजशीर है उनका ये दावा है कि उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। हालांकि तालिबान जो है वो भी ये कंफर्म कर रहा है कि 3 डायरेक्शन से घेर रखा है इस पर पंजशीर को। तो ऐसे में क्या तालिबान का वहां पे कब्जा हो पाएगा पंजशीर पर भी, या जो हिस्ट्री में पंजशीर की जो हिस्ट्री रही है उसके मुताबिक अंदर तालिबान का घुसना मुश्किल होगा। All right, thank you so much for joining us. And so what really is Panjshir resistance all about? Here's a report. The picturesque Panjshir Valley, north of Kabul in the Hindu Kush, the land of the 5 lions of Persia. A land that has never been conquered either by foreigners or Afghans or the Taliban. It was from this liberated zone that Amrullah Saleh, the Vice President of Afghanistan, raised the flag of resistance. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over. Panjshir has been a resistance stronghold for decades. First against the Soviets in the 1980s and then against the Taliban in the 1990s. The province, with a population of 173,000, is now the epicenter of what is being called the National Resistance Front of Afghanistan. Part of this resistance is the Northern Alliance, the coalition of rebel groups that opposed the Taliban rule between 1996 and 2001. Its tallest leader, Ahmad Shah Massoud, a friend of India, known as the Lion of Panjshir, was assassinated by the Al-Qaeda 2 days before the 9/11 attacks in 2001. 20 years later, his son Ahmad Massoud is following in his footsteps and has joined the resistance. From Panjshir, he wrote an op-ed for the Washington Post calling upon the US to supply arms and ammunition to his militia. "You are our only remaining hope," he wrote. From Panjshir, Amrullah Saleh has declared himself the caretaker president of Afghanistan. Backing him is Afghanistan's defense minister, Bismillah Khan Mohammadi. For Saleh, the spy turned politician, the fight against the Taliban is personal. In 1996, his sister was tortured and killed by the Taliban. His life has turned full circle as he returns to Panjshir, the place where he learned to fight under Massoud. There will be 2 big challenges for the resistance. First, Panjshir is surrounded by the Taliban, and second, where will the resources come from? Panjshir is a natural fortress, but it is also isolated by its defenses, which would make sustaining an insurgency a challenge. The Taliban sustained themselves with drug money and funds from allies like Pakistan. Will America, that simply walked away from Afghanistan, back this resistance? Unlikely for the moment, say most experts. In New Delhi, I'm Shreya Dhondial. And back at the Kabul airport, huge crowds continue to wait for a way out and perhaps a way to safety. CNN's Sam Clay with this report. We've landed just a few moments ago here at Kabul International Airport, and clearly the pace of evacuation has been picking up. There are planes leaving pretty regularly now, and large numbers of refugees, of evacuees, getting ready to get on those flights. This is a group that are heading into Qatar, where they're hoping then to either stay there or move on. Guillaume, you're about to leave. What is going through your mind and your heart at the moment? Yeah, actually, I've told this many times with others.
that right now I have a mixed feeling. Being a journalist myself, probably I'm lucky enough to leave because of a lot of traits that exist here. But I'm also leaving a family, a whole family behind, and that's a lot of friends behind. And also most importantly, my city, Kabul, that I've been raised and born here, that's really, it seems that I'm just picking one piece of my soul, but leaving a lot of pieces just back in home. So it's strange. I don't know how to describe this. Am I happy? Am I sad? With this government, with these new rulers, I'm sure they will not leave us any space to be here. That must break your heart. Of course, certainly. That has already broken, but you know that's the reality. Your heart's already broken. Yes. Yeah. Good luck. It's not just the personal tragedies that are so heartbreaking here. It is the tragedy of Afghanistan itself. For 20 years, so many millions of people believed that they would receive Western support. They believed in the evolution of female education, of the arts, of cinema. They thought they had a future. Now that future is getting on aircraft and leaving. As one of the evacuees just said to me, Afghanistan is seeing a total brain drain.